everyone. Good evening. Okay, let's start with the today's class. Today we will start with a new chapter, that is our environment. Okay, in this chapter we will study some of the important concepts related to environment. We will understand what is ecosystem and all its components, and then we will also discuss some of the environmental issues like waste, right? नेक्स्ट ओजोन डिप्लीशन, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट? एंड व्हाट हैपेंस व्हेन things are added to the environment which are not natural, right? If we add something man-made or synthetic to nature, then what are the effects? Okay, so let's try to discuss this one by one. So let's start, right? This is very interesting chapter and we'll study more about our environment. So when we look at this term environment, okay, you all must have heard this on television, you must have read this in newspaper, and in general when we hear the term environment, what comes to your mind? Everything around us, right? Yes, environment is everything around us, simply our surroundings. Now what happens when we add our waste to the environment? So this is the first topic which we are going to discuss here. So in our daily activities, right, we generate a lot of waste material and we just throw it in our garbage, right? And now imagine every day, okay, like on daily basis, every house produces at least a bucket full of waste. So now imagine एक सिटी कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, एक कंट्री कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, एंड ओवरऑल ऑन अर्थ ऑन डेली बेसिस several like lakhs of tons of waste is generated every day. If you talk about some of the metro cities, several thousands of tons of waste is generated every day. अब जिस रेट में हम ये वेस्ट ऐड कर रहे हैं एनवायरमेंट में, क्या सेम रेट में ये वेस्ट डिग्रेड हो रहा है? And the main question is, are all the materials present in waste degradable? Yes, if you think about it, whatever we throw in our garbage, is everything degraded? No, right? There are many materials and basically जो synthetic materials होते हैं, जो man made है, plastic, rubber, सही है, ये completely degrade नहीं होते. And that is why these have long-term effects on our nature. So in this chapter, first let's discuss about waste and its types, biodegradable, non-biodegradable, इनको हम अच्छे से समझेंगे. And then what are the various ways to tackle this problem, right? So we have seen that the food we eat, okay, जैसे हमने life processes chapter पढ़ा है ना, जिसमें हमने digestive system पढ़ा है. Now the food which we eat is digested by the various digestive enzymes. तो यहाँ पे हमने अलग अलग enzymes के बारे में पढ़ा है, जैसे pepsin, trypsin, lipase, amylase, right? Now our food contains different types of compounds, like we have proteins, right? Different types of macromolecules or complex substances are present in our food, जैसे कि proteins, carbohydrates, fats, right? These are some of the important components of our food. So specific enzymes are produced in our body which break down these compounds, these complex substances into simpler one which we can use for our daily activities, for our metabolism. Okay, like जैसे हमने life processes chapter में पढ़ा है, proteins, they are digested and ultimately amino acids are released. Carbohydrates like starch is digested to ultimately release glucose. Fats are digested to ultimately release fatty acids and glycerol, right? Yes, so we have specific enzymes which degrade these complex materials and convert it into simpler ones. So in short, we are degrading, we are breaking down this, right? जैसे हमने पढ़ा है trypsin, okay? Trypsin is
an enzyme which is released by pancreas. And trypsin digests proteins into amino acids. So as you can see here, trypsin enzyme है, protein bound हुआ and it is broken into amino acids. If we talk about lipase enzyme, okay, lipase, that means the enzyme which breaks lipids. It breaks fats into fatty acids, right? So here you can see fat will bind to the lipase enzyme and it is degraded into fatty acid, glycerol. If we take example of pancreatic amylase, तो यहाँ पे क्या होता है, यस अमाइलेज एंजाइम है, मतलब ये किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च, राइट, ये हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. सो पैंक्रियाटिक amylase enzyme will digest carbohydrates like starch into glucose, right. पहले maltose बनेगा and then by further digestion we will have glucose. So ultimately carbohydrate का digestion हो रहा है by amylase enzyme. So what do we understand from this example? That we have different enzymes in our body. तो जैसे humans lipase, amylase, trypsin, pepsin ऐसे अलग अलग एंजाइम्स सिंथेसाइज करते हैं और सब्सटेंसेस को डिग्रेड करते हैं, वैसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, राइट, दीज ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोड्यूस several enzymes to degrade different like variety of chemicals, variety of complex substances which are present in any waste or in any let's say dead plant or dead animal, right, or whatever is added to the waste, whatever is added to the soil. Different organisms produce different enzymes to degrade different components. तो ये तो हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, सही है. तो पहले हम अभी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे अलग अलग है एंड व्हाट इम्पैक्ट दे हैव ऑन नेचर. ओके, अब देखो बायोडिग्रेडेबल, बायो फ्रॉम द वर्ड बायोलॉजी, डिग्रेडेबल मतलब जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं. सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब क्या होगा? यस, सब्सटेंसेस which can be naturally broken down by organisms, right. We have bacteria, we have fungi, we have different organisms which produce specific enzymes to degrade these substances. So we are mainly talking about all the substances which are thrown in waste, right, which will end up somewhere in soil or in water. सही है. तो ये waste break किए जा सकते हैं by specific enzymes. If they are broken, then we can call them biodegradable. But non biodegradable का मतलब क्या होगा? Exactly उल्टा, सही है. If organisms or the enzymes produced by these organisms, okay, cannot degrade, cannot break substances thrown away, substances thrown in our waste, अगर हम इन सब्सटेंसेस को ब्रेक ही नहीं कर पाते, डिग्रेड नहीं कर पाते, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब देखो जो जो सब्सटेंसेस नेचुरल है, सही है, तो नेचुरली इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स भी कई ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए जाते हैं. लेकिन जो सब्सटेंसेस सिंथेटिक है, जैसे प्लास्टिक मैनमेड है, तो इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम तो नेचुरली नहीं होगा, राइट. यस, सो सच सब्सटेंसेस persist in the environment for many like thousands and lakhs of years and they pollute the environment. They have major impact on our environment. They pollute soil, they pollute water, then they also end up in the bodies of animals. When any animal suppose ingest any plastic bag, don't you think it will impact the animal, right? Yes. तो जैसे देखो यहाँ पे हमने और एक एग्जांपल लिया है. सपोज इफ अ पर्सन ट्राइज टू ईट कोल, क्या हम इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं? क्या हम इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं, राइट, बिकॉज आवर बॉडी डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी एंजाइम व्हिच विल डिग्रेड इट एंड वी कैन नॉट ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम कोल. वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म, एनी एंजाइम व्हिच विल ब्रेक देम. Because of this, many human-made materials like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes, because the bacteria and the saprophytes, right, different fungi, do not have the enzymes. They do not have the enzymes which will break plastic or other synthetic chemicals. So that one plastic bag which we just use for once and then throw it, right, it will persist
in the environment for thousands and lakhs of years, right? Depending on the synthetic waste which we throw, right? Depending on the plastic, it will persist in the environment for a very long time, and this is a big problem, right? Imagine tons of waste being produced every day, सही है? और प्लास्टिक जो हम अभी फेंक रहे हैं वो 1000 साल बाद भी ही रहेगा, सही है? वो डिग्रेड ही नहीं हुआ है. So every day now new and new plastic is added to waste, right? So this is just increasing day by day, and that is why we should have some regulation, some control over the plastic usage, right? And we do have better alternatives also. Instead of using a plastic bag, we can easily switch to cloth bag, right? It's reusable and also eco-friendly. अब देखो जो प्लास्टिक बैग है इसको हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला? Because any bacteria or any fungi which are normally degrading the waste substances, they lack the required enzyme which can break plastic. बैक्टीरिया और फंगी के पास जो नॉर्मल डिकम्पोजर्स है सॉइल में, सही है, इनके पास ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो प्लास्टिक को ब्रेक करे, एंड दैट इज व्हाई प्लास्टिक रिमेन इन द सॉइल, इट रिमेन्स ऑन अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure. So we should find out some ways to tackle this problem, right? Yes. तो biologically तो हम ऐसे materials को treat नहीं कर सकते हैं. So definitely some physical processes like application of heat, pressure, ये हम use करते हैं. But under ambient conditions like normal conditions found in the environment, these persist for a long time. Now normally in nature, right, heat or pressure will not be applied on the plastic or any other material, and that is why जो normal conditions है इसमें plastic क्या होता है, persistent रहेगा for long time. What it? Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. Okay, so this is like the definition of any biodegradable substance. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ओके, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा, एंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी, राइट? यस. So naturally these are the two major decomposers, okay? They are present in soil. When any animal or plant or any organism dies, then this dead plant or dead part of plant or animal or the waste products of the plants and animals are degraded by the bacteria and fungi present in soil. They have information, they have genes to produce specific enzymes which will biologically degrade these substances and release nutrients back to soil. देखो जो nutrients plants ने use किए, absorb किए, वही animals ने consume किए. Now when these plants and animals die, the nutrients which were obtained from soil are again given back to soil because of decomposition, right? So जो substances biologically degrade हो सकते हैं ये biodegradable है, right? So इसमें हमारा normal kitchen waste आएगा, right? So it will include fruits, vegetables, leaves, paper, right? Fruit peels, सही है? Kitchen waste. But substances that are not broken down in this manner, that is जो substances हम biologically break नहीं कर पाते, ऐसे substances को हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल. जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अलग अलग टाइप के नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दिख रहे हैं, जिसमें से डेफिनेटली नंबर 1 वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज प्लास्टिक, राइट? यस. एंड वी हैव मेनी अदर काइंड्स ऑफ वेस्ट, स्टाइरोफोम, थर्मोकोल, सही है, राइट? यस. फिर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्रोसेस्ड टायर्स, सही है, राइट? तो ये क्या है, सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. Okay, so aluminum cans, bottles, plastic products, very important example, metal scraps, glasses, ये क्या आ जाएंगे, non biodegradable waste में आ जाएंगे. These substances may be inert, okay, as such they are not impacting any natural process, but the problem is
they persist, they just remain, they just lie in the environment, right? They simply persist in the environment for a very long time. Or sometimes they may harm the various members of ecosystem. Like we have some chemical pesticides जो हम artificially synthesize करते हैं, right? Synthetic chemicals which are used in agricultural fields. As they are synthetic, they cannot be degraded biologically, and they become part of water bodies. They are added to soil again and again during agriculture. So they pollute soil, they pollute water, and many a times such chemicals which are used like chemical pesticides, they are very harmful to different living organisms in the soil and water, right? और आगे हम इस सेम चैप्टर में एक प्रोसेस पढ़ेंगे, बायोमैग्निफिकेशन, how chemical pesticides like DDT or other heavy metals, right, how they, their concentration goes on increasing as the trophic level increases, right? So animals may, especially, right, it will accumulate, higher animals may, it will accumulate in at higher concentrations, right? So many a times we have some chemicals which are chemically inert, they are non-biodegradable, so they just persist, but there are some non-biodegradable substances which are harmful, they are toxic to the organisms. Okay. Now let's discuss the next topic in this chapter, that is ecosystem, and we will also discuss the important types of ecosystems. Okay. Now all organisms such as we have plants, animals, microbes, right, and definitely human beings, we are also like a subset of animals only, right? Yes, plants, animals, microbes, and us humans, right, along with the physical environment. Okay, living organisms and the physical environment, interaction between these two, and maintenance of a constant balance in nature, right? This system will be called an ecological system or ecosystem. तो ecosystem के main दो components है, biotic and abiotic. Biotic का मतलब क्या होगा? सारे living things, जैसे यहाँ पे जो ऊपर सारे हैं, सही है, plants, animals, microbes, humans also are included in this. We are biotic factors. But if you take air, right, soil, सही है, yes or no, stones, water, ये सब क्या हो जाएगा? Then physical factors, temperature, ये सब abiotic factors हो जाएंगे. Both these factors, biotic and abiotic, interact and form an ecosystem. So let's discuss more about ecosystem now. Definition देखो क्या है? All the interacting organisms in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. Okay, तो देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के organisms है which are dependent on each other. Organisms एक दूसरे के साथ interact करते हैं, like animals, like if you take herbivores, they are directly dependent on plants. Carnivores are dependent on herbivores, right? Herbivores are the animals which eat plants. Carnivores are the animals which eat other animals. Then there are some called omnivores. They eat both plants as well as animals, right? Then the waste products of animals and then the degraded, decomposed bodies of the animals and the plants will ultimately add up nutrients to the soil, and these nutrients are absorbed by the plants. In turn again, it will become, these nutrients will become part of the plant biomass. Again it will enter herbivores, carnivores, right? ये cycle ऐसे ही चलता रहेगा. आपने 9th क्लास में बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा है, right? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, right? Yes, so basically ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहते हैं इन इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? देखो, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे इकोसिस्टम का तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होने ही चाहिए, राइट? कंपल्सरी. सबसे पहले इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, सही? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये डीकंपोजर्स है, राइट? They are also very important. They degrade the dead plants, dead animals and the waste products. Imagine world
without decomposers, तो क्या होगा प्रॉब्लम? Waste will not be degraded, right? Yes, waste will just remain on earth and it will lead to spread of diseases. Yes, and it will just lead to piling up of waste materials day by day. But we have decomposers in our soil, and that is why the waste is also degraded and the nutrients are given back to soil. And these nutrients, these elements are again absorbed by the plants, and this cycle just goes on. यही तो nutrient cycles है, right? So all the interacting organisms in an area, in a specific region, together with non-living constituents, ये भी mention करना उतना ही important है. Living organisms, their interaction, and non-living constituents of the environment together form an ecosystem. तो ecosystem के दो components है, biotic and abiotic, that is living and non-living things respectively. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are also going on as per the region in which they are living. सही है, right? जैसे यहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है, दे विल ग्रो, रिप्रोड्यूस. अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड, सॉइल, मिनरल्स. सही है, राइट? सो ऑल दीज आर एबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो इनमें इंटरेक्शन होता है. इवन लिविंग थिंग्स, इनका जो वर्किंग है, सही है, फंक्शनिंग है, this will also be affected by environment, right? Yes, for example, soil, rainfall, temperature, wind, minerals, don't you think all this will affect the plants? Yes, and anything which will affect plants will also affect the animals, right? Abiotic का मतलब क्या होता है? Non living environmental factors. Okay, so let's take an example of ecosystem. So यहाँ पे हमने गार्डन का एग्जाम्पल लिया है. तो किसी गार्डन में आप बहुत अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखोगे. जैसे यहाँ पे एक दिखा है आपको इंसेक्ट, राइट? यस. So in garden you have different types of plants. You may have flowering plants and different variety of plants. We have grasses, right? Then we have birds. So we have biodiversity basically. सही है, flowering plants है, frog है. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. And just before this we have seen what are the abiotic factors which affect the living organisms, right? We have temperature, rainfall, wind, minerals, soil, right? All these will directly or indirectly affect the ecosystem working, right? All the living organisms. Okay, तो देखो अब यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम के एग्जांपल्स लिए हमने. फॉरेस्ट, ponds, lakes. Okay, now all these are naturally occurring. तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम. ओके, देखो इकोसिस्टम के भी हम दो टाइप्स लिख सकते हैं. The ones which are naturally existing, मतलब यहाँ पे humans का कोई contribution नहीं है. Humans have not created this system. These are naturally existing, right? Yes, जैसे forest है, lake है, सही है. These are natural ecosystems. Okay, but if you take any garden or if you take any, let's say, aquarium, crop fields, right? Yes, crop fields, agricultural fields. यहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो होगा ये हम डिसाइड करते हैं. सही है, राइट? यस, गार्डन में कौन से प्लांट्स रहेंगे, यस, पूरा स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं. एक्वेरियम ले सकते हो आप, wherein we mainly grow fishes, right? Other aquatic organisms. So ये क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. ओके, याद रखना है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है. Okay, natural ecosystem, artificial ecosystem के examples. Okay, so if we take forest, lake, pond, ये क्या हो जाएंगे? Natural ecosystems. But if we take crop fields, gardens, then we have aquarium. सही है, ये क्या हो जाएंगे? ये man made है ना, ये हमने बनाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? Artificial ecosystem. Okay, so in ecosystem
we have different kinds of organisms, right? Let's discuss the different types of living factors, living organisms which are part of the environment. Okay, so here we will discuss three main types of organisms. We will study the producers, consumers and its different types, and decomposers. Okay, and what is the role of all these organisms. So let's read out this and see कि आगे हमें क्या क्या देखना है. Okay, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment, sustenance from the environment, right? That means how these one organism is dependent on other. Okay, what is the source of food of one organism and how this organism itself will act as food for other organism, right? So इसी को तो हम food chain के form में लिखते हैं, right? So let's first recall what we have studied. So we have to quickly go through what are producers, consumers, decomposers. Okay, so producers, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? Yes, they are able to synthesize their own food, right? Yes, they are autotrophic. Well, what will be the mode of nourishment here? Mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition, right? So all the green plants, right? Yes, and all the photosynthetic organisms which we know, all the autotrophic organisms, ये क्या हो जाएंगे? Producers. So these organisms make organic compounds like sugar and starch from using the inorganic substances. जैसे हमने life processes में पढ़ा है ना, CO2 is converted into glucose in the process of photosynthesis. तो ये क्या है? Yes, glucose is a sugar, right? And sugar is the glucose is the main product of photosynthesis, right? It's a sugar. As plants are able to synthesize their own food, they are called producers. Right? And what are the other raw materials which are used along with CO2? Water is also used, right? Water splitting and then oxygen is released. पढ़ा है ना हमने ये photosynthesis में, right? So organic compounds, these are carbon containing compounds. Okay, जैसे ग्लूकोज ही ले लो, C6H12O6. ओके, ये हम कहां से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. ओके, so for this they utilize radiant energy from the sun. Okay, that is light energy. Radiant energy means light energy from the sun is absorbed due to presence of the chlorophyll pigments, right? The green pigments, the chlorophyll molecules which are present in the chloroplast of leaf cells. These pigments absorb the light energy, it is converted into chemical energy, and this basically is used, this energy is used to make glucose, right? So ये कैसे possible है trapping of light? Due to presence of chlorophyll. So all green plants, and we do have some blue-green algae, okay, BGA, blue-green algae. These are actually prokaryotic, okay, these are bacteria. Though the name is blue-green algae, okay, but they are actually prokaryotic. They are now called cyanobacteria. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Cyanobacteria. Okay, so all the green plants and certain blue-green algae, these are producers. They can synthesize their own food, okay, because they have the photosynthetic pigments. Now organisms depend on producers either directly or indirectly, right, for their sustenance so that they can live and reproduce. तो ऐसे सारे organisms को क्या बोलेंगे? Consumers, right? जो organism अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, they cannot manufacture their own food material, own glucose, so they obtain nourishment from plants or other organisms. तो ऐसे सारे organisms क्या होते हैं? Consumers. जैसे अब यहाँ पे देखो एक food chain आपको दिया है, and this food chain is representing the interdependence of one organism on other organism. So here you can see first यहाँ पे क्या है? Plants है, ये producer है. Next, plants are eaten by, let's say, an insect. So insect is directly feeding on the plant. तो ये क्या हो जाएगा? Consumer है.
स्पेसिफिकली ये एक हर्बीवोर है. ये क्या है? हर्बीवोर है. हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच कंज्यूम फूड directly from the plant. They are directly dependent on the producers. Okay. नेक्स्ट अगर हम देखें माउस, ये भी एक कंज्यूमर है क्योंकि ये अपना फूड खुद तो नहीं बना रहा है. सही है, राइट? माउस इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. बट हियर वी कैन सी माउस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, बट इट इज ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. सो ये माउस क्या हो जाएगा? कार्निवोर. ये क्या हो जाएगा? कार्निवोर. ना अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ओमनीवोर. ओमनीवोर क्या होता है? Now in this food chain, as mouse is eating insect, ये क्या हो जाएगा? ये carnivore हो जाएगा. But any animal, any organism which feeds on both animal as well as plant, जैसे कि humans का ही example ले लो, right? Humans eat both plants as well as animals. तो ये क्या हो जाएंगे? Yes, such organisms are omnivores. तो जैसे यहाँ पे ये माउस क्या आएगा? ओमनीवोर में आ जाएगा, right? Yes, but technically in this food chain, as mouse, you can see it's eating insect. So in this, technically this is a carnivore, but in general, any organism which feeds on both insects and animals in general, animals and plants, will omnivore. अब आगे क्या दिया है? देखो लास्ट, owl. Owl यहाँ पे ये भी एक कंज्यूमर है because dependent on other organisms, right? And dependent on other animals. तो ये क्या हो जाएगा? Yes, carnivore, right? ये देखो, ये दिख रहा है. Even mouse indirectly by feeding on other consumers, right? ये भी क्या बन जाएगा? एक कंज्यूमर ही बन जाएगा. माउस और आउल, सारे जो तीनों ऑर्गेनिजम्स थे ये क्या है? कंज्यूमर्स, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ओके, so herbivores, okay, these are animals that feed on grass or other plants. Herbivores are also consumers because they cannot manufacture their own food, like deer, right? Yes, any animal, any organism which directly feeds on plants, right, then it will be called an herbivore. अब देखो कार्निवोर्स क्या है? लाइक यू कैन सी लायन विल ईट अनदर एनिमल, राइट, लाइक अ डियर. तो ये क्या हो जाएगा? लायन विल बी कार्निवोर. व्हेन एनिमल ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम फ्लैश, दैट इज अदर एनिमल, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कार्निवोर्स. ओके, सो लायन, टाइगर, ये कार्निवोर्स है. और ओमनिवोर्स जैसे कि ह्यूमंस, राइट, जो दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं. ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स. ओमनी मीन्स ड्यूअल, राइट, एंड ओमनिवोर्स मीन्स an organism eating both animal and vegetable food. Okay, so in short difference समझ में आ गई? ये तीनों consumers है, right? ये तीनों consumers है. Herbivores will eat only plants, carnivores eat animals, and omnivores will eat both plants as well as animals. Then parasites, okay, ये हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है. चलो याद करने की कोशिश करो. What are parasites? Yes, parasites are the organisms which obtain nourishment from other living organism. Okay, right? अभी देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल ले लो, कार्निवोर्स. The other organism is killed and then eaten. लेकिन parasitic mode of nourishment में हमने क्या पढ़ा है? Yes, an organism like an animal will obtain nourishment from any plant or any other animal, but it should be a living host organism. When any organism obtains nourishment from a living host, then it is parasitic mode of nutrition. Okay, so here we have the definition: an animal or plant that lives on or in another organism from which it gets its food, always at the expense of the host. That means host के जो nutrients है यही हमेशा यूज किए जाते हैं. So here host has disadvantage and the parasite, right? The parasite, it can be any animal or plant. It is obtaining the ready-made nutrition. Okay, so animals में you have
different parasitic worms in our intestine, right? Yes, head lice, ticks. Okay, और plants में कौन सा example पढ़ा है हमने? Cuscuta, right? अमरबेल, ये क्या है? Yes, ये भी parasitic है, right? Obtaining nourishment from other organisms, living organisms. Got it, everyone? Yes. Now, before moving further, we have to also note that decomposers, okay, which mainly include bacteria and different types of fungi in the soil, they are saprophytic. इनका mode of nutrition क्या होता है? Saprophytic. That means when any animal or plant dies or their dead parts, they fall on the soil, like let's say dead leaves, bark of the tree, or let's say waste materials from the animals, right? Yes, and then the dead plants and animals, all these are ultimately added to soil. These dead organisms will be the source of food for the bacteria and fungi. Bacteria and fungi, who are the decomposers, right? They produce specific enzymes and are involved in the degradation of this dead matter. As the bacteria and fungi are obtaining nourishment from dead matter, dead plants, dead animals, their waste products, that is why it's said to be saprophytic mode of nutrition, right? So now let's discuss quickly about what is a food chain. जैसे एक छोटी सी food chain हमने देखी थी ना, right? Plant, insect, mouse, owl, right? That was a food chain. Representation, okay, in the form of a flow chart, right? And what are we representing? Interdependence of organisms on each other. And we will also discuss another very important point, that is unidirectional flow of energy. Okay, तो unidirectional flow समझने के लिए हमें सबसे पहले फूड चेन का कंसेप्ट देखना है. So, series of organisms feeding on one another at various biotic levels form a food chain. Okay, very easy, very simple and precise definition, right? Series of organisms, सही है, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा. Simple, right? So like plant, it's eaten by herbivore. Herbivore is eaten by carnivore, and then the apex predator, the top predator, right? So a series of organisms feeding on one another at various biotic levels, यही क्या बन जाएगा? Food chain. Okay? So we have producers here. First level हमेशा क्या होगा food chain में? Producer. Then we have herbivore, and then we have carnivore. So energy is also transferred from producer to herbivore, and then from herbivore to carnivore. Right, everyone? Yes. Series is basically number of the organisms, like sequence of the organisms. Okay, biotic levels. और ये interdependence दिखाते हैं. सही है? ये जो food chain होता है, जैसे यहाँ पे देखो plant है, let's say maize plant. Okay, it's eaten by, or there are some insects like locusts who are feeding on the crop plant. Then we have lizards who feed on the locust, and then we have snake who feeds on lizard. तो ये क्या हो जाएगा? Food chain. यहाँ पे हमने एक series दिखाई है organisms की, depending on their feeding habit, right? Now see the terms which are mentioned here. Okay, जैसे maize, definitely it's a plant, तो ये producer है. Okay, now locust, ये क्या है? Herbivore है. अब ये पहला consumer है ना. देखो plant तो producer है, अब कंज्यूमर्स की लिस्ट में सबसे पहला क्या आएगा? लोकस्ट. तो ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर. ओके, सो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. नेक्स्ट कौन है? लिजर्ड. लिजर्ड ये फूड चेन में अगर हम लेवल्स देखें तो ये तीसरे लेवल पे है. थर्ड ट्रॉफिक लेवल. हर लेवल क्या बोलते हैं? ईच स्टेप इन फूड चेन इज ट्रॉफिक लेवल. ओके, ईच स्टेप इन द फूड चेन इज ट्रॉफिक लेवल. ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, राइट? लेकिन कंज्यूमर तो दूसरा ही है. पहला कंज्यूमर कौन है? ये इंसेक्ट है, लोकस्ट. दूसरा कंज्यूमर कौन है? लिजर्ड. सो सेकेंडरी कंज्यूमर. और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं स्नेक. स्नेक लेवल क्या है? फोर्थ.
ट्रॉफिक लेवल क्या आएगा? फोर्थ। देखो, मेज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन लोकस्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल, लिजर्ड थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल तो फोर्थ है, लेकिन कंज्यूमर का नंबर क्या आएगा? तीसरा ही आएगा ना, सही है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। ओके, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। लोकस्ट प्राइमरी कंज्यूमर, इन शॉर्ट हर्बीवोर। लिजर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट्स अ कार्निवोर। सही है हियर। एंड स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर, ये फूड चेन में सबसे लास्ट है, तो ये हमारा एपेक्स प्रेडेटर इस फूड चेन में हो जाएगा। राइट, यस, ये तीनों, ये आगे लास्ट तीनों कंज्यूमर्स है। राइट, primary, secondary and tertiary. So very important term. Each step or level of the food chain is called a trophic level. हमेशा first trophic level में कौन रहेंगे? Plants. Right? You cannot directly start with an animal. Right? Yes, we have to start with plants who are producers. They are able to synthesize their own food. They are autotrophic. So हमेशा plants first trophic level में रहेंगे, herbivores second trophic में रहेंगे, and then so on. तो इस फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? यस, इस फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? 4। सही है, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, each level, each step of the food chain is trophic level, and definitely trophic level is related to न्यूट्रिशन। ओके, ये देखो सारे ट्रॉफिक लेवल से, फटाफट देखो सारे 1, 2, 3, 4। Autotrophs, okay, plants, green plants and blue-green algae, right? They are able to synthesize their own food. Okay, autotrophs or the producers fix solar energy and make it available for the consumers. That means autotrophs जो है, green plants, they use solar energy, that is light energy, convert it into chemical energy. Ultimately food is produced and it becomes part of the plant biomass. Ultimately this energy is converted into plant biomass, plant cells, plant tissues. These are eaten by the consumers. Like plants will be eaten by herbivores. So energy which is trapped in the body of plant will now enter the body of herbivore, right? The first consumer, primary consumer, in the form of food. Food is the fuel for us, right? It has energy compounds, right? So autotrophs basically, they fix solar energy and make this energy, ultimately solar energy is made available to the consumers in the form of plant biomass. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, we have solar energy, right? It's absorbed by the plants. Autotrophs, ये self feeders है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. Autotrophs capture solar energy, that is light energy, the radiant energy, and convert it into chemical energy. They capture, they harness the solar energy and convert it into chemical energy. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस. From autotrophs, energy goes to heterotrophs, right? जो सारे consumers है, they are dependent on others, तो इनको हम क्या बोलेंगे? Heterotrophs, right? And then definitely the decomposers. So here you can see, जितनी भी energy sun से available है, उसका सिर्फ 1% ये plant, use करके chemical energy में convert करेगा, ये biomass में convert, right? And then some part of it will be used by the plant itself for its activity, its growth, right? और जो भी plant biomass का part है, that will be available to the insect. Okay, इस point को अच्छे से समझना है. Light energy is absorbed by the plant, right? Photosynthesis होगा, glucose बनेगा, plant will grow, right? So some amount of energy, some amount of glucose is used by the plant itself for its growth, right? And it will lead to biomass formation. So whatever is trapped in the body of plant is the food available to the next trophic level, that is the insect here. तो ये क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, ये हर्बीवोर है. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. Some energy is actually lost in the form of heat. Okay, some energy is actually lost, and rather this is not some energy, about 90% of the energy is lost. So सिर्फ 10
एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। ओके, सो यहाँ पे देखो आगे और बढ़ेंगे अब। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी जाएगी। व्हेन द सेकेंडरी कंज्यूमर विल ईट प्राइमरी कंज्यूमर, देन एनर्जी जाएगी ना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। Here also during the energy transfer, what do we see? Majority of energy is actually lost. Heat energy is lost. And here also only 10% of energy is transferred. आप सोचो पहले इधर ही हमने 10%, फिर उसका 10% आगे जाएगा. So by the time you reach fourth and sometimes the fifth trophic level, the energy is so less that no more trophic levels can be supported. And that is why only we have limited number of trophic levels. Okay, we can't just keep on drawing कि first, second, third, fourth, fifth, fifth, sixth, ऐसे हम continuously ऐसे 10 organisms की एक continuous chain या list नहीं बना सकते, right? Generally there are 3 to 4 levels, max to max किसी food chain में 5 organisms होंगे, इससे ज्यादा एक food chain में number of organisms, number of trophic levels नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पहले यहां से रेडिएंट एनर्जी कितना 1% ही यूज किया है, और हर ट्रॉफिक लेवल में जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर कितना 10%। हाँ, फिर ये जो पहले 10% है इसका 10% आगे, इसका 10% और आगे टू द टर्शरी कंज्यूमर। सो बाय द टाइम you pass the energy to tertiary consumer, the energy is so less that no more trophic levels can be supported. Okay, see again at every level you can see heat energy is lost. Okay, and majority energy is lost actually. फिर आगे देखो ये हमारा apex predator है, मे बी ईगल, हॉक, सही है। टॉप लेवल कंज्यूमर बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे? टॉप लेवल कंज्यूमर। सो इस फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? काउंट करो। हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन दिस फूड चेन? 5, right? Plants first, then second, third, fourth, fifth. 5 है ना, right? 5 trophic levels. Okay, even हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें हीट एनर्जी लूज होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लॉस्ट। ओके, 10% ही तो ट्रांसफर हो रहा है, right? Now when all these organisms die, okay, right from the plants to the top predator, when these organisms die, their dead bodies will become part of the soil, right? And in the soil we have decomposers. What do we have in the soil? We have decomposers, we have bacteria, we have fungi which will degrade the dead plants and animals and release the nutrients back to the soil. देखो इनिशियली क्या हुआ था, प्लांट्स ने सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे, सही है, राइट? यही तो आगे आगे ऐसे ट्रांसफर हुआ, और आगे हम क्या देख रहे हैं, when all these organisms die, their dead bodies are degraded and decomposers act on them, right? Decomposers will degrade the dead plants and animals and nutrients are released back to soil. Same cycle will continue. The same nutrients will be used by the plants again, right? So, इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ गया? अगर हम न्यूट्रिएंट्स को देखें, ओके, मिनरल्स को देखें, तो ये तो पूरा ऐसे साइकिल घूम रहा है, सही है। मिनरल्स को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करें, जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन सॉइल में से एब्जॉर्ब किए, यही नाइट्रोजन फिर second trophic level, third, fourth, fifth, and when these organisms die, the nitrogen is given back to soil. यही साइकिल चलता रहेगा। सो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक होता है, लेकिन अब एनर्जी देखो, जो एनर्जी हमने सनलाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की, यहाँ पे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की, ये ऐसे आगे आगे बढ़ा, और कितना परसेंट बढ़ा है आगे, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओनली 10%। तो 10%, फिर उसका 10%, उसका 10%, ऐसे बढ़ाते जाओ तो क्या हो जाएगा, एवरी ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड। सो बाय द टाइम यू रीच हियर एंड व्हाटएवर इज रिमेनिंग दैट इज यूज्ड अप बाय द डिकम्पोजर्स, राइट? सो एनर्जी के टर्म्स में तो कुछ बचा ही नहीं है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, जो एनर्जी हमने सनलाइट के फॉर्म में यूज की,
क्या यही एनर्जी हम वापस दे देते हैं सन को? नहीं देते हैं ना, राइट? फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखो। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स है ना। सो न्यूट्रिएंट साइकिल नाम में ही है साइकिल, मतलब न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक होता है। दे सर्क्यूलेट अगेन एंड अगेन, राइट, थ्रू सॉइल एंड थ्रू ऑर्गेनिजम्स। बट अगर हम एनर्जी की बात करें, सही है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हियर, राइट? अगर हम एनर्जी की बात करें, जो एनर्जी हमने सन से ऑब्टेन की, यहाँ पे प्लांट्स एब्सॉर्ब द सनलाइट एंड देन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 90% तो हर लेवल में लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% ट्रांसफर हो रहा है। सो बाय द टाइम यू रीच द टॉप level and then the remaining some energy is also used up by the decomposers, right? तो क्या हो जाता है? Energy is completely consumed, it's lost. So flow of energy is unidirectional. I repeat, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो साइकिल से, लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें तो फ्लो कैसे होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, okay? That is only in one direction, okay? Uni means one, right? Unidirectional. Now the next subtopic we have is length of the food chain and flow of organic matter, okay? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सिर्फ 10% एनर्जी आगे जा रही है, इसीलिए तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, राइट? As only 10% of energy is transferred from one trophic level to next trophic level, and this will happen at the successive trophic levels, every trophic level. So by the time you reach third, fourth or fifth trophic level, the energy is so less कि हम और एक trophic level आगे बढ़ा ही नहीं सकते। इसीलिए कोई भी फूड चेन जो है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 या आइडियली 3 to 4 इतने ही trophic levels होते हैं, okay? Now when one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again, right? ये तो हमने पढ़ा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ओके? जैसे पहले प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने सनलाइट एब्जॉर्ब की, बायोमास बनाया, सही है। अब जब प्लांट से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में जा रही है, फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोर, तो मेजॉरिटी एनर्जी लूज हो रही है और ये वापस सिस्टम में नहीं आ सकती, राइट? इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो ऐसे हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लूज हो रही है, देखो, सही है, हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लूज हो रही है। ये क्या है, देखो, टॉप प्रेडेटर ये हो गया, और ये क्या है? डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगी, राइट? हर लेवल में एनर्जी लूज हो रही है। So the green plants and terrestrial ecosystem capture about only 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना सनलाइट कोई भी प्लांट, कोई भी लीफ सरफेस ऑब्टेन करता है, सही है, इसमें से एक्चुअल यूज कितना होता है, कैप्चर कितना किया जाता है टू मेक फूड? ओनली 1%, ओके? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जितना सनलाइट वो रिसीव करते हैं, उसमें से सिर्फ 1% कैप्चर करते हैं एंड प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहीं पे कितना एनर्जी अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया है, राइट? नाउ व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट इज herbivores, a great deal of energy is lost as heat to the environment. रादर हर ट्रॉफिक लेवल में, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर किया जाएगा एनर्जी, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके? सो सेम हियर, जब प्लांट्स, ओके, प्राइमरी कंज्यूम्स द्वारा खाए जाएंगे तो क्या होगा? लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, मतलब कुछ ये खुद भी यूज कर लेंगे, सही है, एनिमल्स खुद यूज कर लेंगे टू